करिबा अबाउट द यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस विषय में गत क्लास रे कंटिन्यूटी पढुथिले एक्सटेंशन थ्योरम विषय आलोचना करूथिले आज हम पढिबा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी स्टेटमेंट स्टार्ट करिबा लेट x, d and y, रो आर टू मैट्रिक्स स्पेसेस f is a function x to y is said to be uniformly continuous on x if for epsilon greater than 0 there exists delta depending upon epsilon only greater than 0 such that f of x1 minus f of x2 mod less than epsilon whenever x1 minus x2 mod less than delta। जो डेफिनेशन तुम्हें माने पढ़ी प्लस टू सेकेंड थर्ड सेकेंड सेमिस्टर जो पाठ पढ़ल सेम डेफिनेशन एफ ऑफ x1 माइनस एफ एक्स टू लेस दैन एप्सिलॉन व्हेनेवर x1 x2 mod लेस दैन डेल्टा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ताहले बर्तमान आम जदि कथा हबा व्हाट द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी आम पढ़ी मन पड़े कंटिन्यूटी सेम थिंग x, d, y, रो आर टू मैट्रिक्स स्पेसेस f is a function x to y is said to be continuous at a point a belongs to x if for epsilon greater than 0 there exists delta। What is delta? It depends upon not only epsilon also a, it depending upon not only epsilon khali no epsilon and a such that the statement is same f of x minus f of a ro mod is less than epsilon whenever x minus a ro mod less than delta। तार जड़े भाव जे सर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस जो डेफिनेशन आम जनरल फंक्शन भी से डेफिनेशन तार डिफरेंस कौन रहा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस आउ जनरल फंक्शन डिफरेंस कौन ना डिफरेंस बहुत लार्ज डिफरेंस। जनरली ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए गोटा कंटिन्यूटी देखा गोटे फंक्शन गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे बट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इज डिफाइंड ऑन ए सेट एक्स दैट इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस। कंटिन्यूटी देखा जाए एट ए पर्टिकुलर पॉइंट उपरे 1 बेले 2 बेले 3 बेले एट ए पॉइंट बट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस देखा जाए होल सेट उपरे। ताला हम एगुड़ा व्याख्या करि परिबा इफ ए फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन x देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बुझले कि नहीं जदि गोटे अंकटा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है गोटे सेट ऑन एक्स ऊपर माने कौन एक्स ऊपर जेकोसी पॉइंट नब सी अंकटा होची कंटिन्यूअस दैट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू मीन्स इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फंक्शन विल बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हवा को बाध्य मु आलोचना संगे तुम करैबी। तो बर्तमान आगे जापर भर डेफिनेशन डिफरेंस पे बुझीपारे कौन ना ये पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यू चेक करा जाए यूज देख तो सीधे ही x1 x2 आर्बिट्रेरी पॉइंट ये लिख दूँ वेयर x1 and x2 आर एलिमेंट्स ऑफ दे आर नॉट फिक्स पॉइंट दे आर द आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ x। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ इफ ए क्वेश्चन इज आस्क्ड what is the necessary condition that when a function of f x to y is not uniformly continuous, this is the condition of uniform continuous। जदि यूनिफॉर्म कंडीशन न हुए ताले कौन कहबा ताले हम या कहबा there exists epsilon greater than 0 such that for every delta greater than 0 there exists x1 and x2 belongs to x such that f of x1 minus f of x2 mod not less than epsilon means कौन हम greater than equal to epsilon whenever x1 minus x2 mod less than delta। very important topic पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस डेफिनेशन कौन नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस डेफिनेशन कौन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस दीटा को सांग लेस देन अछंती नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस लक्ष्य कर कौन देयर एक्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव डेल्टा ग्रेटर देन 0 माने आमे एप्सिलॉन डेल्टा एमिति मजे नउथिबा जे fx1 minus fx2 mod ग्रेटर देन एप्सिलॉन and whenever x1 minus x2 mod less than ये दीटा कंडीशन समान आस्तुबो ये दीटा कंडीशन देखो जोड़े लेस देन एप्सिलॉन अछि ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन अछि ये जो नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस डेफिनेशन ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस डेफिनेशन। लेट अस कम टू गोटे प्रश्न बासीबा थ्योरम टू क्लास थ्योरम हैला जे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इंप्लाइज कंटिन्यूअस बट नॉट कन्वर्स किंतु कन्वर्स सत्य नुहे। ताले बर्तमान कौन मुझे आलोचना संगे संगे करदेली यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इंप्लाइज कंटिन्यूअस मुझे आपको व्याख्या करी आलोचना करी खाली बुझे दूसरी परीक्षा पड़े तुमको निजे राइट कर
तुम एमती लिखो लेट ए बी ए फंक्शन x to y where x, d and y, rho are two matrix spaces be uniform continuous on x मु लिखी ना नोट रे मु बुझे दउची निजे लिखे चेष्टा करिवो be uniform continuous on x that means कौन स्टेटमेंट है f of x1 minus f of x2 रो mod is less than epsilon whenever x1 minus x2 रो mod less than delta choosing x1 equal to ax, x2 equal to in particular x1 equal to ax, x2 equal to a, we have f of x minus f of a ro mod less than epsilon whenever x minus a ro mod less than delta. So f of x is continuous at x equal to a. This is the definition of continuous. But the point A is taken as arbitrarily from x. Point A कौन choice कराई arbitrarily from x रू कुहाई ता माने कौन? So the function f of x is continuous on x. मु ये पॉइंट को आर्बिट्रारिली नहीं ची x ताने कौन? नु जे कौन सी पॉइंट x रू नहीं ची अंकटा मोर कंटीन्यूअस है ची. So I say f of x is continuous on x. Continuous on x means uniform continuous. So f of x is uniformly continuous on x. बुझियाला पिले ताले हमर कोन सॉरी यूनिफॉर्म कोन नहीं थी सो आई कैन से सॉरी f of x इज कंटीन्यूअस ऑन x होला माने सॉरी वाला मोर वन नहीं थी मु यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस प्रमाण कर देली कंटीन्यूअस. बर्तमान मु आसीबी बट नॉट कन्वर्ट्स को आसीबी. तुमे जानिचो नॉट कन्वर्ट्स को कला बळे वी हैव टू गिव एन काउंटर एग्जांपल. बड़े एग्जांपल में एमिति दबा जे कि कंटीन्यूअस होउथिबो किंतु यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होउ नथिबो. So आरंभ कली स्टेटमेंट लेट x, d and y, rho are two matrix spaces. f is a function of x to y defined by f of x is equal to f is a function of r to r defined by f of x equal to x square with usual metric. but usual metric जानि पड़थबो d of x, y is modulus of x minus y where x and y are element of x and well as y. x एलिमेंट नियो कि y रो एलिमेंट नियो से मान होचन डेफिनेशन यूजुअल मेट्रिक x माइनस y रो मॉडुलस. मु कोन देखैबी मु तुमको देखैबी दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस ऑन r. तर मोर डोमेन होची पिले मोर r अछि यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस ऑन r बट नॉट कोन कंटीन्यूअस ऑन r बट नॉट यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस ऑन r. Let us discussion start करिबा. मुकले let a belongs to r be taken as arbitrarily. a गोटे पॉइंट देली arbitrary पॉइंट देली. So what is the definition of a continuity says for a given epsilon positive there is delta greater than 0 such that कौन नवा पिले f of x minus f of a रो mod less than epsilon whenever x minus a रो mod less than delta. मु एटा को नेबी तुमको मु देखेबी ए जो डेल्टाटा ये डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन होथबो आटा ए मध्य हो जदी हेई गला देखो मु डिफरेंस आउट माने पको यूनिफॉर्म कंटीन्यूटी रे डेल्टाटा डिपेंड अपॉन ओनली एप्सिलॉन. बट कंटीन्यूटी केस रे हम डेल्टाटा डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओनली एप्सिलॉन as well as on a. So let us start करिबा. Now f of x minus f of a रो mod your f of x is x square. You have a simply x square minus a square modulus. So I have a x plus a into x minus a modulus. That means I have a x minus a modulus into x plus a modulus. That means I have a x minus a modulus आपको भांगुची पले x minus a plus 2a modulus चलिबो x plus a ही हला. आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी बसाओ लेस देन इक्वल टू x minus a mod ब्रैकेट ऑफ x minus a mod plus 2 into a mod. लेट अस assume जे x minus a mod जो लेस देन में डेल्टा टा चॉइस करिचे लेट अस चूज डेल्टा इज इक्वल टू 1. So x minus a mod is less than केते हला x minus a mod is less than 1 put here less than लिखि देली x minus a mod bracket of 1 plus 2 into a mod. But this value is less than epsilon. So this value is less than epsilon means x minus a mod into bracket of 1 plus 2 into a mod is less than epsilon. Therefore x minus a mod is less than epsilon by 1 plus 2 into a mod. देखो पहले तुम्हारा x minus a mod less than delta दरकार थिला
तुझे पता ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 1 प्लस 2a mod तो होगा कथा डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 1 प्लस 2 इंटू a mod किंतु ना तुम्हें डेल्टा को चॉइस कर 1 सो डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 कॉमा एप्सिलॉन बाय 1 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू a रो मॉडुलस What you see? तुम्हें कौन देखिल? Our delta depends upon not only epsilon as well as on a. Hence, the function f of x is continuous at a belongs to r. Now, ମୁଁ तुमको ଦେଖେଇବି that function f of x is not uniform continuous on r. So, what my statement is that our function कौन दिया है? Function दिया है r2r defined है f of x equal to x square. I choose two number x1 equal to delta by 2 plus 1 by delta and x2 equal to 1 by delta. Particular मु दीटा मु नॉट देखेबी ना नॉट माने पला पर्टिकुलरली मते तुम देखेबार अछि को कंडीशन नेले मो अंकटा हबो नाही x1 नेली डेल्टा बाय 2 plus 1 by delta x2 है 1 by delta. So what my assumption मु कोन कहते माने पका कोन डेफिनेशन कहते नॉट यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस रे x1 minus x2 लेस देन डेल्टा हटा बाध्य but f of x1 minus f of x2 mod कौन होता है greater than or equal to epsilon हमारा आवश्यकता अछि. Let us start the problem. x1 minus x2 रो mod केते हला देखो you have a delta by 2 plus 1 by delta minus 1 by delta रो modulus they two cancel you have a delta by 2. Delta by 2 is less than कौन थे delta yes it is obvious सही गला. Now एक बार डिस्कशन करिबा. Now f of x1 minus f of x2 what is f of x x square what will be f of x1 means delta by 2 plus 1 by delta रो square what is f of x2 1 by delta square रो modulus फिटे देबा delta square by 4 1 by delta square 2 into delta by 2 into 1 by delta is simply 1 minus 1 by delta square. 1 by delta square is cancelled. You have a delta square by 4 plus 1. So you can see that value obviously greater than 1. In मूल्यटा कौन हो डेल्टा स्क्वायर बाय 4 डेल्टा तो पॉजिटिव नंबर कहिছে ना सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1 तलो व्हाट यू सी आमर हबता लेस देन एप्सिलॉन जति मु एप्सिलॉन टको पले 1/2 चॉइस करे इफ आई चूज एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 तलो व्हाट हैपन 1/2 जो टर्मटा 1 इट इज ग्रेटर देन 1 है ना तो कौन हो ये ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर देन एप्सिलॉन हेले कि नहीं पले यदि हम एप्सिलॉन को 1/2 को चॉइस करिबा ये 1 माने कोन एप्सिलॉन टू बड़ हेलानी दैट मींस इफ आई कैन सिम देखिबा इफ यू टेक एप्सिलॉन 1/2 आई हैव f of x1 minus f of x2 mod is greater than epsilon. So x1 minus x2 mod less than delta fx1 minus fx2 mod greater than epsilon. Therefore I can say the function of f is not uniformly continuous on r. हैला तापर नेक्स्ट हम एटले थ्योरम का आसीबा the composition of two uniform continuous is also uniform continuous. आम गत क्लास पढ़ुले कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस होता आज बढ़िया कंपोजिशन ऑफ टू यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इज also यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस. स्टार्ट कली द स्टेटमेंट एट f is a function x to y g is a function y to z are two uniform continuous functions. Let x d y rho z eta are three metric spaces. So what to show composition of two uniform continuous ए दुटा composition means gov is a function from x to z आमे एटा को यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस देखैबार अछि. स्टार्ट द प्रॉब्लम आरंभ करिबा. f is a function x to y is uniform continuous. What the definition says for given epsilon 1 ताना दे दोछ there is delta 1 greater than 0 such that कौन प्ले होइटी कहिबा if एया कहिबा f of x1 minus f of x2 रो mod is less than epsilon whenever x1 minus x2 less than epsilon करिबा आ करिया less than delta 1 फुल इटिक आसो g फंक्शन कहिला मु मते यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस ता पे कोन हो कहिया पिले g of y1 minus g of y2 रो mod is less than epsilon 2 नउची
whenever y1 minus y2 ର mod less than delta 2. You can see here f is a function of x to y. You can see f is a function of x to y. g is a function of y to z. যদি x is a element of x নেবি তাহলে f of x is a element of y হব। তাহলে তুমি যে y1 নউছ y1 को কোন কই পারিবি I can say f of x1, y2 को कोण कहि परिबी I can say sum f of x2 where x1 and x2 are element of x। तर ए जो स्टेटमेंट अछि तर कि मोर कोण हैला पिले को you have g of f of x1 minus g of f of x2 raw mod is less than epsilon by 2 whenever y1 माने केते f of x1 minus f of x2 raw mod less than delta 2। मैं स्टेटमेंट को उल्टे ही लिखूँ दैट मीन्स आई मे राइट f of x1 minus f of x2 mod is less than delta 2 implies g of f of x means go of x1 minus g of f of x2 means go of x2 raw mod is less than epsilon 2। आपको इक्वेशन 2 देली मोर इक्वेशन 1 ए जो स्टेटमेंट अछि ताकू तयारी करूची पहिले वोल्टेज तयारी करूची x1 minus x2 रो mod less than delta 1 implies f of x1 minus f of x2 रो mod is less than epsilon 1 एटा को इक्वेशन 1 देली। नाउ चूजिंग डेल्टा 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन लक्ष्य कर देखिए ये जा ये से स्टेटमेंट चूजिंग डेल्टा 2 इक्वल टू एप्सिलॉन मतलब व्हाट यू सी आपको कंबाइन कर दे कंबाइन कले ए दिटा गोटे हे गला तो व्हाट डू स्टेटमेंट बिकम x1 minus x2 mod is less than delta 1 implies gf of x1 minus gf of x2 ro mod less than epsilon 2। What is the meaning of the term? R na kon pile you can see here x1 minus x2 more less than delta 1 implies gf of x1 minus gf of x2 less than epsilon 2। So the composition of function of gf is uniformly continuous on x। So that is the proof of the statement। ठीक लगे ताहले आमे आलोचना कले composition of two uniform continuous is also uniform continuous। So let us come to another statement theorem dasiba theorem ti hela let x d and y rho are two matrix spaces f is a function of x to y is uniformly continuous and if xn be a Cauchy sequence in x so that f of xn is also Cauchy sequence in y। Very interesting theorem। x d y rho are two matrix spaces f है function x to y is uniform continuous यदि xn टा Cauchy sequence in x हुए प्रमाण कर जे f of xn टा Cauchy sequence in y होबो आसिया प्रमाण। As of pile the function of x to y is uniformly continuous। So what the definition says for given epsilon positive delta greater than 0 depending upon epsilon such that I may say x1 minus x2 mod is less than delta implies f of x1 minus f of x2 mod is less than epsilon। You can see my definition मु एमिति लिखि पारे कि एमिति कहि पारे fx1 minus fx2 mod less than epsilon whenever x1 minus x2 mod less than delta and these two number are chosen from x। okay पिले जति मु x1 x2 बदल रे if I change xn and xm मु जदि x1 x2 दे तो पर्टिकुलर नंबर तो होती ना देयर आर्बिट्ररी नंबर instead of x1 and x2 I write xn and xm। so what my statement become xn minus xm रा mod is less than delta implies f of xn minus f of xm रा mod is less than epsilon where xn and xm are element of x। पिले आरंभ करी व्हाट you are given xn is a Cauchy sequence in x मने पका definition of statement as xn bracket is a Cauchy sequence so for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer बड़ा n such that मने पड़ला xn minus xm रा mod is less than epsilon whenever n m रा mod greater than n। this is the definition of a Cauchy sequence in a matrix space। So now what I say instead of epsilon I choose delta committee already delta मोर हाथ रे अछि। so what I write xn minus xn mod less than delta
फॉर ऑल व्हेनेवर n, m इज ग्रेटर देन n यहीटा को आदर मु कंबाइन कर देली जदि कंबाइन कर दो व्हाट आई फाउंड तले मु कोन पाइली आई हैव f ऑफ xn माइनस f ऑफ xm रा मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n, m ग्रेटर देन n यहीटा कोन की देखिलो पिले xn माइनस xm रा मॉड लेस देन डेल्टा n में ग्रेटर देन n हेले xn इज ए कॉची सीक्वेंस f of xn माइनस fx रो मॉड लेस देन एप्सिलॉन n में ग्रेटर देन n हेले आ माने कोन कहिबा की f of xn इज ए कॉची सीक्वेंस कोठी इन y कोन xn टा कोठी अछि x रो अछि a लागले कोठी अछि जीवो y रे आसी सो इट इज ए कॉची सीक्वेंस इन योर y बुझी पाइलो जोड़ा सब बुझी कर पाले नेक्स्ट तरह let xt be a matrix space and let a be subset of x then the function of f from x to r defined by f of x is equal to d of x बड़ a आपको डिफाइन एमती कराई छि infimum of d of xy such that y belongs to a और I में से infimum y belongs to a of d of xy is uniformly continuous कौन पे कथा है x इज द मैट्रिक्स स्पेस a है सबसेट ऑफ x f है फंक्शन x to r डिफाइंड बाय f of x d of x, a ताकू से और वेरीफाई कला कोन दैट इज infimum of y belongs to a of d of xy तो d x to a टा रहिला एटा कोन y जे एलिमेंट ऑफ a d of xy प्रमाण करिबा ए होउची यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस तला आरंभ करे पले कोन स्टेटमेंट का सीबा जदि हम फास्ट यूज करी व्हाट इज अबाउट द ट्रायंगल इनइक्वालिटी d of xy आई में राइट d of x, z plus d of z, y now I take the infimum y belongs to a on both side उभय पटे infimum को लगाउछ so what I have infimum y belongs to a d of xy less than equal to infimum y belongs to a of d of xz plus d of zy what the term says you the calculator this is your f of x infimum y belongs to a d of xy d of x, a जहाँ नाम ची f of x so what I write it is your f of x less than equal to आधर infimum लगे आधर y अच्छी की ना तो there is no change d of x, z infimum y belongs to z d of zy कौन हबो लक्ष्य करो d of xy y belongs to a is f of x d of zy infimum y belongs to a कौन हबो ना f of z हबो so I have a f of x minus f of z less than equal to d of x, z now interchanging z and x मु z को interchange कर दो so what I have f of x f of z minus f of x less than equal to d of z, x but you know as it is matrix space d of xy is d of yx I may write it d of xz बड़े कथा पे मन पकोच व्हाट वी नो बाय मॉडुलस x ना x if x greater than equal to 0 minus x if x less than 0 if I say mod x less than a means mod x means option theta either x or minus x that means either x belongs to a and minus x less than a so if I say x is less than a minus x is less than a that means I may say modulus x is less than a so what you see आपको x पड़ा x less than a देखो जब माइनस कॉमन नहीं जीवा दैट इज माइनस x less than equal a therefore modulus x is less than a so I have a f of x minus f of z mod less than equal to d of xz let us take रिप्लेस कर दियो z as y z को y रे रिप्लेस कर दियो तो व्हाट यू फाइंड f of x minus fy रो mod is less than equal to d of xy पिले मत देखो तो कौन दरकार you want to show it is uniformly continuous that means for a given epsilon greater than 0 there is delta greater than 0 such that what you need fx minus fy रो mod is less than epsilon whenever x minus y रो mod less than delta means माने d of xy is less than delta because we are considering the usual metric so what you see here जति तुमे f of x minus fy टा को लेस देन एप्सिलॉन चॉइस करल देन कोन पिला हो को d of xy लके करो व्हाट हैपेन तुमे चॉइस करल f of x minus fy लेस देन एप्सिलॉन मींस d
d of xy is less than epsilon. So choosing delta is equal to epsilon. Okay, correctly. d of xy is less than delta, it is epsilon. So choosing delta equal to epsilon. आमे जो डेल्टा को एप्सिलॉन है आउ का डिपेंड करी छि कि ओनली एप्सिलॉन. सो चूजिंग डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन आवर फंक्शन f of x is uniformly continuous on a. ठीक है, तो इंटरेस्टिंग ए रिजल्ट पाई गलो. तुम आमे तो चॉइस करे f of x minus f r मोड लेस देन एप्सिलॉन. देन कोन आसला d of a रखे कर ये लेस देन एप्सिलॉन कहिला त d of xy लेस देन एप्सिलॉन. बट हम दरकार d of xy लेस देन डेल्टा. चूजिंग डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, that delta depends upon only epsilon. So f of x is uniformly continuous on a. ठीक है.